This conference will now be recorded. Ya Ali Madad sir, Ya Ali Madad friends online. Ya Ali Madad. Maula Ali Madad. मदद सर मौला अली मदद, मौला अली मदद। तमाम साथियों को या अली मदद, शुक्रनिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रनिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। या मौलाए मेहरबान मदद फरमा, अलीयुल कय्यूम, अली अल्लाह मदद फरमा। नूर मौलाना शाह करीमुल हुसैनी हाजिर इमाम, हाजिर इमाम। या मौला तौफीक, ताहीद, हिम्मत व यारी मौला, तौफीक, ताहीद, हिम्मत व यारी मौला। एक बार फिर हम तमाम साथियों के हुजूर में यहाँ पर कुछ इल्म की चर्चा करने के लिए जमा हुए हैं। And we thank every single one of you who have sent some beautiful questions that shows us and tells us that our friends, Jamaat, younger and olders, are listening to these lectures and sessions with very much interest और बहुत ही तवज्जो से सुनने की वजह से उनके अच्छे अच्छे सवालात सामने आते हैं। Today our subject is importance of ilm in understanding our tariqa. ये सब्जेक्ट से आपको पता चलता है कि इल्म according to the फरमान of Imam Sultan Muhammad Shah Salawatullah alayhi, may our soul be sacrificed to their Imam, and Kalam Mawla Ali, that it is the ilm with which you may recognize Allah. If you recognize Allah, meaning you have understood your religion and your tariqa. इल्म वाली रूह दर्जा ब दर्जा ऊपर चढ़ती है. It is the soul with the ilm which will rise, elevate higher and higher. And at the higher level, that ilm वाली रूह खुदा को पहचानती है. Ilm or ilm will help each one of us to understand our tariqa in a correct manner with a correct concept. क्योंकि अगर अकीदा फॉर्म नहीं होगा, ठीक नहीं होगा, तो इसकी मिसाल ऐसी होगी कि जैसे
एक बिल्डिंग एक टेढ़ी ईंट के ऊपर खड़ी की जाए. If our concepts are not clear, it would be like building a building on a not so firm or straight foundation. If foundation is not laid correctly, then you know the building will not be built correctly. क्योंकि वो बिल्डिंग गिर जाएंगी, टूट जाएंगी, नुकसानदेह होगी, जिसका फाउंडेशन ही गलत रखा गया हो. I want you to look at this screen. और यहाँ पर मैं उर्दू में भी आपको बताना चलूंगा कि आज का जो सब्जेक्ट है कि कितना जरूरी है हमारे मजहब में इल्म, ताकि हमारे अकीदा दुरुस्त हो, हमारा फाउंडेशन फर्म हो, स्ट्रेट हो, सॉलिड हो. I want you to look at these 4 phrases, and they are from the Quran, of course. And these are not new phrases. इसमें कोई भी नई बात नहीं है हमारे लिए. But I want you to look at it and reflect on it for a second, because it would come handy. अगर हम इसको समझेंगे तो हमारा जो आज का सब्जेक्ट है उसमें इंशाल्लाह आपको मदद मिलेगी. ला तकनतु मिन रहमतुल्लाह, खुदा से ना उम्मीद ना हो जाओ. इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सब खुदा की तरफ से हैं और खुदा के पास लौटने वाले हैं. अल-वाहिद अल-कहार, Allah is one and He is powerful, the most magnificent. Al-Wahidul Kahar, together, वो जबरदस्ती से सबको एक कर लेने वाला है अपने अंदर. नफ्सुन वाहिदा, one single soul. एक रूह से हम तमाम पैदा हो गए, और हम देखेंगे कि कौन सी रूह से हम तमाम पैदा हो गए. Think of these 4 phrases and let's jump into our subject for the day. The subject we are about to cover, in no shape and form, it's a new subject. But because we do have new joiners, newcomers, and sometimes we forget our old lesson, then it is okay to repeat some of the subjects. And look like this subject has become controversial or point of interest. क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि रोजाना सामने आता रहता है, बार बार सामने आता है, तो क्यों ना हम इसको एक और बार कवर करें. And I think it will do good for us as a group, because the better the foundation, better the understanding of our tariqa, the better it is. Then उसके ऊपर हम खड़े रहकर एक सॉलिड इल्म के फाउंडेशन के ऊपर हमारा तरीका और हमारा मजहब की बुनियाद बुलंद हो, इंशाल्लाह. So let's look at this very small question, kind of rephrased, and I like this rephrased question and I appreciate this rephrased question, क्योंकि अक्सर लोग दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं इसी मुताबिक, लेकिन इसके अंदर एक खास बात थी जिसकी वजह से
नाचीज ने इस सेशन की बुनियाद और आगाज इस क्वेश्चन से करना चाहता है, और पहले हम 15-20 मिनट और whatever time it takes to understand this. My friend says, in your many lectures you have said, आपने अपने बहुत सारे लेक्चर्स के अंदर, there is no reincarnation concept in our तरीका, हमारे मजहब में reincarnation का अकीदा नहीं है. Can you tell us the logic behind that? What is the logic behind that in what I'm saying? And what are our belief contrary to that? That's why I like this question. क्योंकि ये हमारे एक दोस्त साथी ने, हमारे एक लिसनर ने, हमारे खेर खान ने एक ही क्वेश्चन को रिफ्रेश करके पूछा कि चलो ठीक है, हमने मान लिया, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या बेस के ऊपर हम ये बात करते हैं. अब ये सवाल बहुत अच्छा बन गया, एंड इंशाल्लाह आज हम एक बार फिर इसी कॉन्सेप्ट को 3 लेवल्स पर समझेंगे, और ये 4 फ्रेजेस जो आपके सामने है उसको हम इस्तेमाल करेंगे अपने लॉजिकल आंसर के अंदर. 3 लेवल पर समझेंगे हम. सबसे पहले चले हम पीछे चलते हैं, और याद रखें कि ये सवाल और ये नजरिया कॉन्सेप्ट, दिस क्वेश्चन एंड दिस कॉन्सेप्ट कहां से आया और क्यों बार बार हमारी नजरों के सामने आता है, हमारे ज़हनों के अंदर आता है. What is the reason? Let's take a journey in the back. Let's say about 600 years ago, जब हमारे पीर, हमारे दाई ईरान, Iraq, Egypt, meaning from the other Muslim communities, जहां पर हमारे इमाम तशरीफ फरमाते हैं, वहां से जब वो इस्माइली तरीके को फैलाने के लिए, to preach and teach the Ismaili tariqa, Imam would send them to the far-fetched places. They came to India. At that time, it was not India the way it looks today. It was a subcontinent. Subcontinent, almost half of the Asia, and within the half of the Asia, this subcontinent of India, with many different countries today, were part of this subcontinent, India. जहां पर mostly Hindu, Buddhist रहते थे. हमारे पीर जब यहाँ पर तशरीफ लाए, and they saw that there are no other Muslim whom we can convert to Ismailis, but there are millions and millions and millions of people whose belief sits back almost 6,000 years. कितना कहा कि एक ऐसे लोगों का मुल्क है कि जहां का मजहब तकरीबन 6,000 साल पुराना है, यानी कि कहीं आदम और हजरत नूह सलाम के दरमियान का कोई मजहब यहाँ पर पाला जाता है. आप समझ गए कि ये हिंदू और बुद्धिस्ट मजहब की तरफ इशारा था.
हमारे पीर जो बहुत ही रूहानी तरक्की के साथ होते थे, उन्होंने क्विकली they learned the language, the tradition and Hindu mazhab religion. उन्होंने बहुत ही जल्दी, क्योंकि वो रूहानी पावर के साथ थे, तो विद इन द फ्यू डेज क्विकली उन्होंने वहां का तौर तरीका, उनकी जबान, उसके बोलने चालने का जो मजहबी रिवायत वगैरह थी, यानी कि टर्म्स एंड टर्मोलॉजीज जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, वो सीख ली और उन्होंने वहां पर अपना प्रचार, दी प्रीचिंग और इल्म का काम, टीचिंग का आगाज किया। अब एक सवाल आता है सामने कि क्या उन्होंने पहले ही दिन इन लोगों को कुरान, इस्लाम, इमाम, नूर, अल्लाह, प्रॉफिट वगैरह की तालीम दी होगी, या उनको ABC, यानी कि उनको they would have started them with a very elementary knowledge, elementary understanding in the terms and terminologies which they understood, यानी कि उनको उस जबान में तालीम दी कि जो वो समझते थे। पहले हम एग्जांपल लेते हैं एक और, लेट्स टेक टुडे। अगर यहाँ पर मोस्ट लोग उर्दू बोलने वाले हैं and then other are English speaking Jamaat in this audience. Let's suppose करें कि मुझे सिंधी आती होती, ब्रुशिस की आती होती, स्वाहिली आती होती, स्पेनिश आती होती, and I would start teaching you in Sindhi, in Swahili, in Brushiski, or in Persian, or in Arabic. What would happen after 5 minutes? I would not see anyone on this line. Maybe a couple of people who would have understood the language and the terms and terminologies, they would stay, all others will leave. क्या ये बात दुरुस्त है? आप कहेंगे जी, क्योंकि आप हमको उस जबान में सिखाए हैं, समझाएं जो जबान हम बोलते हैं। It has to be in the language that we understand. Take second example. On the very first day a child goes to school, teacher asks, what would you like to be, son? And the child says, I want to be a doctor. पहले दिन बच्चा स्कूल जाए है और उसकी टीचर पूछे कि बेटा आपको क्या बनना है, वो कहे मुझे डॉक्टर बनना है, और टीचर उसको कहे कि चलो मैं आपको हार्वर्ड के यूनिवर्सिटी में दाखिल करा देती हूँ। The teacher takes the child and said, let me admit you into Harvard because you want to be a doctor. No, right? It does not make sense, no logic. That would never happen. इसी तरह से जब तरीके की तालीम देनी होती है, किसी मजहब को सिखाना होता है, किसी नए मजहब की दावत देनी होती है, तो उनको बच्चों की तरह दावत देनी होती है जो वो समझते हैं। तो वो बच्चा that says I want to be doctor, teacher says very well, let me teach you ABC. So this child learns ABC, let me teach you 1 2 3. इसी तरह से हमारे पीरों ने
उनको उनकी जबान में, यानी कि बहुत ही आसान बच्चों की जबान में वो लैंग्वेज यूज करते हुए वो बातें जो उनकी समझ में आती थी उन्होंने तालीम देना शुरू की। उन्होंने कहा कि जिस तरह से आपके राम रहमान, आपके जो भी देवता है, आपके जो भी खुदा है, उनका एक मैनिफेस्टेशन आज दुनिया में मौजूद है, लेकिन ये वही है, आप ही का राम है जो आज रहमान बनकर मौजूद है। आप ही के कृष्ण है जिसका दोबारा से ज़हूर हुआ है। और उनको डराया। क्या मतलब डराया? आए दोबारा से, लेट्स टेक द सेम एग्जांपल ऑफ द चाइल्ड। व्हेन योर चाइल्ड इज ग्रोइंग अप और वो चलना शुरू करता है, थोड़ा सा लंबा हो जाता है, he can grab the knob of the front door and he can walk out of the front door। जब बच्चा चलने लगता है और उसका हाथ अगर दरवाजे के ऊपर पहुंचता है तो हो सकता है कि वो दरवाजा खोलकर बाहर निकल जाए। So what does mother says to the child? बेटा बाहर नहीं जाना, बाहर बहू है, बाहर मॉन्स्टर है। माँ डराती है बच्चे को। हमारे पीरों ने उनको कहा कि अगर आप अच्छे काम करोगे तो आपको अपने खुदा के पास आपको ले जाया जाएगा, अगर आप बुरे काम करोगे तो इसी दुनिया में चक्कर काटते रहोगे और तुमको निजात नहीं मिलेंगी। उनको डराया, because they understood their language which was taught correctly 6,000 years ago, but got lost without the prophets, because they did not follow the other prophets after that. They did not follow Hazrat Noah, Hazrat Ibrahim, Hazrat Musa, Hazrat Isa, Hazrat Muhammad. They did not follow any of them. So the concept was lost. The true meaning of life and death वो लॉस्ट हो गया। क्यों? कि वो जो तालीम थी जो एक जमाने में करेक्ट थी वो पुरानी हो गई थी और इतना मडल अप हो गई थी कि वो लॉस्ट हो गई थी। तो कैसा डराए उनको, कैसा समझाए उनको? तो उनको लालच थी कि अगर आप अच्छे काम करोगे तो आपका दायरा जो है, आपका जो सर्कल है वो छोटा कर दिया जाएगा और आपकी निजात हो जाएगी। But if you don't, then you will have to keep coming back until you do good. So what would you like to do? आप क्या चाहते हैं कि आपका ये जो सफर है उसको छोटा करके आपको निजात देवे, या आपको बार बार दुनिया में आना है तकलीफ उठाने के लिए? तो उन्होंने कहा हमको बार नहीं आना है, हमको निजात चाहिए। एक बच्चे की तरह उसको डराया और उनको समझाया। कौन सी मिसालों से? जो मिसाल वो समझते थे। उनके आगे अभी तक जन्नत और दोज़ख का कॉन्सेप्ट नहीं था, because those concepts were Islamic concepts. They did not understand their vocabulary. वो ज़बान को नहीं जानते थे, वो टर्म्स को नहीं जानते थे। उनको वो ज़बान में सिखाया जो जानते थे, समझते थे। उनको उन्हीं के तरीके के अंदर से एक मॉडर्न लेटेस्ट तरीका समझाया गया। जिस तरह से एक बच्चे को कहा जाता है कि इफ यू लर्न योर एबीसी, इफ यू लर्न योर 1 2 3,
then when you grow up, you will be able to become a doctor. So what does child do? He starts to learn ABC. But now imagine the same child who is in 10th grade or 12th grade in high school, वो अभी तक ABC 1 2 3 बोल रहा है. उसकी टीचर और उसके माँ बाप का क्या होगा? वो बोलेंगे कि ये बच्चा जो है, he is not capable of learning anything but ABC and 1 2 3. अगर आज भी कोई जो उस जमाने में यानी कि 600 साल पहले हिंदू से इस्माइली बना, लेकिन आज भी वो ABC और 1 2 3 को ही अपनी टोटल तालीम मानता है. The Ismailis, the Khojas, who became Ismailis close to 650 years ago, they still are stuck with that ABC and 1 2 3, the terms and terminologies, and the way they were threatened and the way they were taught are still sitting at that level. Then what would be your example today? That you did definitely become Ismaili, but you never grew up. क्योंकि जब हमको ग्रो अप करना होता है, इंशाल्लाह ताला, I don't see anyone on this channel. आप तमाम इल्म के आशिक हैं. You guys have been learning and you understand the knowledge. Inshallah, none of you are like a children, because you are no longer in KG or first grade. You have been learning this and you have crossed all the way into the high school. फिर हम 600 साल के बाद अब हम आते हैं कि what is the concept of Islam. अब आप इस्लाम के अंदर आए और देखिए कि यही जो कॉन्सेप्ट आपको हिंदू से इस्माइली बनाते हुए समझाया गया था. Do you find the same way of teaching and preaching? Yes. When we were children in Islam, and when we were learning the Islam, हमको डराया गया और समझाया गया. How? Language changed. The word reincarnation was no longer used. What was used? If you do good, you will have heaven. If you do bad, you will have hell. If you do bad, you will burn in hell again and again forever. If you wanted to have a nijat, complete salvation, do good. उसको बोलते हैं good tidings and threatening. Do good, get a salvation. Do bad, you will go to hell. यही तरीका आपको हर एले किताब के अंदर मिलेगा. एले किताब, the Jewish, the Christian, the Abrahamic traditions and Muslims. हर एक जो वन गॉड में बिलीव करता है और खुदा की किताबों को मानता है, उसके अंदर आपको रीइंकार्नेशन नहीं, hell and heaven का concept मिलेगा. It is actually the same concept with the modern language. कि अगर अच्छा काम करोगे तो निजात मिलेंगी, बुरा काम करोगे तो फेरे फिरोगे. लेकिन यहाँ पर क्या गया?
What was the language used? कि बुरे काम करोगे तो दोज़ख की आग में जलाया जाएगा और अच्छे काम करोगे तो आराम से जन्नत में रहोगे। आपने देखा खाली डिफरेंट ये दो था। वही बात जो हमारे पीरों ने हिंदू से खोजा बनाते हुए फरमाई और समझाई, उसको हमारे दूसरे दाइयों और पीरों ने जन्नत और दोज़ख के कॉन्सेप्ट से समझाया, डराया। Once again, I wanted to draw your attention to this concept. क्यों? Why? क्योंकि हम मजहब में बच्चे थे। Why were they threatening us and teaching us? क्योंकि we were children in learning. They did not want us to wander off into the street and get hurt. माँ क्यों बच्चे को डराती है? Is mother lying to the child when she said, बाहर नहीं जाना बेटा, बहू है, don't go outside, there is a monster? Is mother lying to the child? No, she wants safety for the children. वो अपने बच्चे को हिफाजत में रखने के लिए कहती है, बेटा बाहर नहीं जाना, मास्टर आपको खा जाएगा. To keep the child in safety. Just like that, हमारे उन पीरों ने जो हिंदू से इस्माइली बना रहे थे, कहा कि देखो अच्छे काम नहीं करोगे ना तो फेरा फिरने पड़ेंगे. ये एक मिसाल थी एक बच्चे को समझाने के लिए. I'm gonna laugh out loud for a second. अगर आज इस सेशन के अंदर where we have 20, 30, 40, 50, 60-year-old Jamaat listening to this lecture today and tomorrow in the recording, if I or your mother tell you, and you are 20, 30, 40, 50-year-old, don't go outside, there's a monster, he will eat you. You're going to be LOL, right? You're going to be laughing out loud. Because why? Why did you listen to your mother when you were 2, 3-year-old and you stayed inside your home? And why are you will be laughing today? Because you are no longer children. You are no longer children. Now let's come to learn how an adult, कौन सा एडल्ट? ये हमारे एज का एडल्ट नहीं, जो मजहब के अंदर एडल्ट है उसको किस तरह से तालीम दी जाती है. Let's talk about that, because it would not be fair of me that I will tell you the story of 600-year-old and tell you the story and the events and how it happened, long time ago, but do not show you and tell you and teach you. How does an adult learn? Which adult? कौन सा adult? वो adult नहीं जो उम्र में 40-50 साल का है, वो adult जो मजहब में grow up हो गया है. So now ask yourself before we go to the next step, are you a child? Then you keep learning ABC. No, I'm no longer a child. I'm an adult in my tariqa, in my understanding, in my religion. Then let's come and see. और मैं आपको इमाम के फरमानों के अंदर से, इमाम कुरान के अंदर से, और आपको ऐसी मिसालों से समझाऊंगा इंशाल्लाह, अगर मौला की ताईद और तौफीक रही और मौला का हाथ नाचीज के ऊपर रहा तो मैं कोशिश करूंगा एक अदना सी. आप देखें, ज्यादा पीछे जाने की जरूरत भी नहीं है, सिर्फ look at the difference between the Imam Aka Sultan Muhammad Shah Salawatullah alayhi, may our soul be sacrificed to that Imam, and his Faramin.
and his way of teaching. हमारा पिछला जामा सिर्फ 60 some years ago, he was telling us that अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी, और वो हाथ में छड़ी लेकर खोजों को सिखाते थे कि सीखो, अच्छे काम करो. Imam Sultan Muhammad Shah was the very first Imam, or at least in my humble knowledge, they have given farman on every single thing, even how to drink tea, how to eat, how to cook, what to use in cooking, how to dress, how to walk, how to talk, how to live. Just like a mother and a child. Now, fast forward, आप आगे आए हाजिर इमाम के जमाने में. Look at the Farman. Just in 60 years, Hazir Imam is treating us like an adult now. Hazir Imam is telling us, you are no longer child, you are no longer children, you are no longer a... मौला के फरामीन को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मौला is treating us like an adult now. Just compared to the last Juma. फरामीन के अंदर फर्क देखें. अब आए हमने हिंदू तरीके के अंदर किस तरह से हमको फेरों का डर देकर निजात की तरफ तवज्जो दिलाई. इस्लाम के अंदर दोज़ख का डर देकर जन्नत की लालच दिलाई. Let's come into our तरीका. We hardly hear, बहुत ही कम हम सुनते हैं कि अच्छे काम करोगे तो जन्नत में जाओगे, बुरे काम करोगे तो दोज़ख में जाओगे. हमारे तरीके का एक ही फाइनल पॉइंट है कि आप मरकर इमाम के नूर में वासल हो जाओगे. नो मोर फेरे, नो मोर दोज़ख. आपने देखा, नो मोर फेरे, नो मोर दोज़ख. What happened? Because हम अब शरीयत में नहीं, अब हम तरीकत में नहीं, अब हम हकीकत. What is हकीकत? The truth. The truth of the mazhab, the truth of the religion is in front of us as an adult. Now we are learning how to be PhD, how to be doctor, how to be grown up. How can we become one with Imam? That is what we are learning now. Please do not tell yourself, nor let anyone tell you okay. Can we, you can hear me, you can see me, and you can see the screen. Is that correct? Yes, sir. All right, Yes. thank you. आज इमाम हमको नहीं डरा रहा कि आपको फेरे फिरने पड़ेंगे, आपको दोज़ख में जलाया जाएगा. नहीं. He is just telling us and teaching us the way an adult should be taught and taught. अगर हम अपने मजहब के अंदर अपने आप को बच्चा रखना चाहते हैं तो you can say, because when I was a baby I was only drinking my mother's milk, I'm going to continue to drink my mother's milk. Because in my KG and first grade I was learning ABC and 1 to 3, I'm going to continue to learn ABC and 1 to 3. क्योंकि जब मैं छोटा था तो मैं तो अपनी माँ का दूध पीता था, मैं कंटिन्यू से यही करूंगा. और चूंकि मैं
छोटा था तो मैं केजी में एबीसी लर्न करता था, 1 2 3 लर्न करता था। दोपहर को मेरी मिस मुझे सुला देती थी। आई एम गोना कंटिन्यू टू डू दैट। देन नो वन कैन स्टॉप यू। खुदावन ताला had given you free will. Imam does not take your free will. Why would I take your free will? कौन होता हूं मैं आपकी फ्री विल को लेने वाला? अगर आपकी फ्री विल है कि नहीं मुझे बच्चा ही रहने दो, मुझे हिंदू ही रहने दो, मुझे इस्माइली मजहब में आ तो गया हूं मैं, लेकिन मुझे हिंदू मजहब बहुत अच्छा और उसके नजरिए बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, I have become Ismaili, but I love the concepts and the way of Hindu religion. Let me be there and follow that. Then who am I to stop you? Allah had given you free will. Imam does not take your free will. Why would I say no to you? अगर आपको ये अच्छा लगता है, go right ahead. अगर हम कहते हैं कि no, I am an adult, अब मैं अपने तरीके में बड़ा हो गया हूं, मुझे डराओ नहीं, मैं बच्चा नहीं हूं. Don't tell me there's a monster outside. I'm no longer a child. Don't tell me you're going to burn me in hell if I do bad. You don't have to threaten me anymore. Tell me how can I be one with the Imam. अब मुझे बताओ कि मैं फनाफी इमाम कैसे हो जाऊं, क्योंकि ये है हमारे मजहब का निचोड़. हकीकी मजहब के अंदर डराया नहीं जाता है, हकीकत बताई जाती है. और हकीकत क्या है? Remember those 4 phrases on your screen that I talked about at the beginning? ला तकनतु मिन रहमतुल्लाह. अगर हम रीइंकार्नेशन की बात करते हैं तो खुदा से नाउमीदी हो जाती है कि यार मैंने बहुत बुरे काम किए हैं, मैं तो बार बार जन्म लेता रहूंगा और मैं तो दुनिया में फंस गया. If we say ला तकनतु मिन रहमतुल्लाह, there is no despondency. I would not lose the hope on my Imam. Then how can we say अगर मैं बुरा काम करूंगा तो मेरा मौला मुझे माफ नहीं करेगा और मैं इस दुनिया में चक्कर काटता रहूंगा? And what happened to inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Don't we believe that कि हम खुदा की तरफ से आए हैं, खुदा में लौटने वाले हैं, हम इमाम के नूर से हैं, इमाम की रूह से हैं, इमाम की तरफ से आए हैं और हम इमाम ही के अंदर लौटने वाले हैं? Isn't that our तरीका? क्या ये हमारा यकीन नहीं है, हमारा बिलीव नहीं है? यही तो है हमारा तरीका, यही तो है हमारा मजहब, यही तो है हमारा यकीन, यही तो है हमारा ईमान. That is what we believe in today. That everything is encompassed in Imam and we are from him and we will return back to him. तो फिर यहाँ पर फेरे का कहां से हिसाब किताब हो गया? और क्यों हम उन बातों पे यकीन करें जो हमारे मजहब की नहीं है? आप कहेंगे लेकिन हमारे इमामों ने, हमारे पीरों ने हमको किनान में बताया, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे अलवाइजों ने हमको ये तालीम दी थी. हाँ दी थी. Yes, I accept. They did that. लेकिन उन्होंने आपको बच्चा देखा था तो आपको डराया था. I do not see you children. I believe in you that you are an adult today. So don't let me treat you like a children. I do not want to treat you like a children. I want to treat you like I want to treat myself, as an adult in our tariqah. Imam wants to treat you like an adult. Why would you treat yourself as a child then? Imam is not treating you like a child. He's not threatening you. Why would you
do that to yourself? You will not, right? That's not logical. Again, the question that comes, well, our P told us in Gnan, and our ALWAAZ and our other teachers and our other scholars have talked about reincarnation because they see you as children. Do not let them treat you like a children. आप उनको आपको बच्चे की तरह नहीं ट्रीट करने दें. आप कहें कि हम बच्चे नहीं हैं, then they will treat you like an adult. But as far as I'm concerned, and I love you all, I want to treat you like I would like to be treated. मैं आपको इस तरह से ट्रीट करना चाहता हूँ जिस तरह से मैं अपने आप को ट्रीट करना चाहता हूँ. We are adult. जिस तरह से इमाम आपको ट्रीट करना चाहते हैं. Look at Maula Baba Farman. Where do you see reincarnation and talk of a hell? नहीं. Imam is not doing that. Why this Garib and Nachis? I want to teach you what Imam wants to teach you. We don't live in the past. We are no longer living 600 years ago. We have gone from Shariat to Tariqat to Hakikat. The truth is that we are from Him and we will return back to Him. That is the truth. And how can we, who are from Imam's soul, इमाम की रूह से जो हम हैं, क्यों इमाम अपनी रूह को किसी घोड़े गधे जानवर के अंदर पैदा करेगा? नौज़ुबिल्लाह. No, he will never do that. He loves us. Why would he leave us in this world? इमाम बहुत तकलीफ लेकर इस दुनिया में आपकी निजात के लिए आए हैं. Mullah says, I have taken a great deal of burden and pain to come to this world for your salvation. Why would he leave you in this world? No, he will not. You are from him and you will go back to him. At this, I will stop here on this subject.